अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। सो वेलकम टू वीलॉजी बाय अतिया शौर। आई होप आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी, क्योंकि मेरे माइक के साथ थोड़ा सा मसला हो रहा है, तो इसलिए मैं कंफर्म करना चाहती हूँ कि मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी आप लोगों को। और अगर आ रही है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है। ठीक है, तो अब तक तो ठीक ही आ रही थी वीडियोस में, इस वीडियो का पता नहीं। चलिए चलते हैं फिर आगे। हम लोग अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करते हैं। हम पढ़ रहे हैं थर्ड सेमेस्टर BS जूलॉजी, और ये मेरा अपना भी सेमेस्टर है जैसा कि आप लोगों को पता है। चलो चलते हैं फिर आगे। हमारी जो टॉपिक्स हैं इस वीक के, 2 सब्जेक्ट के कंप्लीट हो गए, 103 के कंप्लीट हो गए। उसके अलावा BIF 101 के भी कंप्लीट हो गए। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, सही है। उसके अलावा अब उसके अलावा जितने अपलोड हुए हैं ना इसके एनिमल बिहेवियर के, सारे कंप्लीट हैं। अब इसके अलावा हमारे पास ये आ गया बिज़नेस कम्युनिकेशन। ठीक है, बिज़नेस कम्युनिकेशन में इंग्लिश में जो है ना हमारे सिर्फ 5 टॉपिक्स हुए हैं, 6, 7, 8 मतलब 3 टॉपिक्स आते हैं। ठीक है, अब इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। ENG201 बिज़नेस कम्युनिकेशन की वीडियो सुन लेते हैं सबसे पहले। आप Welcome to Virtual Business. I'm PP and we are studying business communication. We have so far completed, not yet very, we are still on the way to complete it, many subtopics of business communication. We have studied what is communication, the flow of communication, the challenges of globalization to communication, the process of communication, and the barriers of communication, non-verbal communication. Let's suppose that after having gone through all these things, how can we be very much effective communicator? You must remember that while discussing the importance of communication, we discussed that a successful or skilled communicator draws on an extensive and complex body of knowledge. That includes psychology, that includes linguistics, that includes sociology, that includes your knowledge of graphics. Because to give information, you need all these things. But to make your communication, your messages, both oral or written, you need to develop and use certain traits. Let's think that what makes people skilled and successful communicators. And why we call that a certain person, a certain he or certain she is a very skilled communicator. They are a very successful communicator. Whenever they communicate, they get their message across. People understand them. People feel that if they are having a mind meeting with them, people believe them. People act the way they want them to act. So what are the qualities of good communicators which help the receiver to understand the message as the sender wants them to understand? We all know that in business communication, we have to interact in certain agreeable and disagreeable situations. We not only have to write good news messages, we also have to write bad news messages. And while we are writing all types of messages, we need to have a lot of potential to write these messages. So if you are preparing any message, written message or oral message, you must consider that you do not detract your audience, your reader of the message. When you are giving an oral presentation, be sure that no physical barrier is there. The audience is able to listen to you. The audience is able to see you. So, as I said in the beginning, that a successful or a skilled communicator always consider his messages from the receiver's or the recipient's point of view. And they have certain traits which make them successful communicator. So let's see that what are these traits, यानी वो कौन सी खूबियां हैं जो लोगों को सक्सेसफुल कम्युनिकेटर बनाते हैं। यानी कि जब वो oral message देते हैं तो वो उनका message is always understood, and when they write any written message, their message always bring the desired result, the result that they want, the result that is that they want to have. So we say that there are 5 traits of good communicator. यानी good communicators के 5 खवाइश हैं कि जो अगर हम अपने अंदर पैदा करें तो we can also be very good communicator and we can make our communication very effective. What are these traits? Number 1 is perception, number 2 is precision, number 3 is credibility, number 4 is control, and number 5 is congeniality. So we begin one by one. What is perception? Perception, and this is the trait of the skilled communicator, successful communicator. They are able to predict how you will receive their message. They anticipate your reaction and shape the message accordingly. They read your response correctly and constantly adjust to correct any misunderstanding. तो आपने देखा कि आपका जो एक स्किल्ड कम्युनिकेटर है वो परसीव करता है कि उसका रीडर जो है वो मैसेज को कैसे रिएक्ट करेगा, उसका रिस्पॉन्स जो है वो मैसेज के ऊपर क्या होगा। अब अपने रीडर को सामने रख के दे चॉक आउट द मैसेज। एक बार याद रखिए कि whenever we write any message, we have some idea, and this idea is sometimes very vague. What we need to know, we need to bring those ideas on paper if we are preparing any written message. But if we are to make any oral message, even in that case, we also, before giving any presentation, we need to write down our
मेन पॉइंट, अपने मेन पॉइंट्स को लिखने के बाद वी शुड नो दैट क्या वो बात जो हम कन्वे करना चाहते हैं वो बात जो है वो समझ आ रही है, वो हमने लिख ली है, वो दूसरा हमारा रेसिपिएंट जो है, हमारा रिसीवर जो है वो उस बात को समझ जाएगा। यानी हम परसीव करते हैं कि हमारा रीडर जो है वो हमारे मैसेज को किस तरह समझेगा, उसकी हमसे क्या एक्सपेक्टेशन है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि वी शुड हैव द नॉलेज ऑफ अवर रिसीवर, यानी हमें अपने रिसीवर के बारे में इल्म होनी चाहिए कि हमारा रिसीवर जो है वो किस तरह सोचता है। इसीलिए जब हमने प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को स्टडी किया था तो हमने ये कहा था कि रीडर जो है वो उसका जो हमारे रेसिपिएंट है उसके बारे में, उसकी लाइक्स डिसलाइक और उसके बारे में कि वो क्या स्टेटस है ऑर्गेनाइजेशन में, कौन है, ये तमाम मालूमात जो है हैसियत सेंडर जो है वो हमें मालूम होनी चाहिए। तो परसेप्शन जो है इसके तहत हम ये देखते हैं कि जो स्किल कम्युनिकेटर हैं दे ऑलवेज नो दैट व्हाट इज गोइंग टू बी द रिस्पॉन्स ऑफ देयर रीडर, एंड if they think that there can be any misunderstanding in their messages, they replan their messages according to the anticipated knowledge of their reader. So the first trait of the good communicator is that they always bring in mind the picture of their reader. वो अपने रीडर की पिक्चर अपने जहन में लाते हैं और फिर या अपने ऑडियंस की पिक्चर अपने जहन में रखते हैं और फिर उसके मुताबिक वो अपने मैसेजेस जो है उनको प्लान करते हैं। दूसरी चीज जो है वो है precision. What is precision? They create a meeting of the mind. When they finish expressing themselves, they share the same mental picture. यानी वो अपने जहन में एक मीटिंग पैदा कर देते हैं। जब वो मैसेजेस क्रिएट कर रहे होते हैं तो अपने जहन में वो अपने सामने बैठा लेते हैं अपने रेसिपिएंट को, चाहे वो लेटर लिख रहे हैं या वो कोई तकरीर कर रहे हैं, कि उनके रिस्पॉन्स के नतीजे में उनके जो ऑडियंस है वो क्या क्या बातें जो है वो सोच रहे हैं। तो ये मीटिंग इन द माइंड, प्रिसीजन से मुराद गुड कम्युनिकेटर होल्ड अ मीटिंग विद देयर रेसिपिएंट, विद देयर ऑडियंस इन देयर माइंड। करके करते हैं कि वो जहन में अपने रेसिपिएंट के साथ बैठे गुफ्तगू कर रहे हैं। तो इससे बहुत अंदाजा हो जाता है कि वो क्या रिएक्ट करेंगे, उनका रिस्पॉन्स जो है वो क्या होगा, तो वो उसी के मुताबिक अपने मैसेजेस जो है वो शॉर्ट आउट करते हैं, लिखते हैं, ड्राफ्ट करते हैं। थर्ड थिंग इज क्रेडिबिलिटी. क्रेडिबिलिटी मीन्स दे आर बिलीवेबल, दे हैव फेथ इन द सब्सटेंस ऑफ द मैसेज, यू ट्रस्ट देयर इन्फॉर्मेशन एंड देयर इंटेंशन। यानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये हमने उस वक्त भी जिक्र किया था कि किसी भी मैसेज के सक्सेसफुल होने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड हैव अ क्रेडिबिलिटी विद द रीडर. सो द गुड कम्युनिकेटर ऑलवेज हैव अ क्रेडिबिलिटी विद देयर रीडर. देयर रीडर बिलीव व्हाट दे इन्फॉर्म देम ऑफ, यानी वो जो भी इन्फॉर्मेशन उनको देते हैं उनके रीडर जो है वो उसको मानने के लिए तैयार होते हैं. तो गुड कम्युनिकेटर have this quality कि उनकी credibility जो होती है that is established with their reader. The next thing is control. They shape your message depending on their purpose. They can make you laugh or cry, calm down, change your mind or take action. Any good communicator always control the process of communication. They make you laugh. You act the way they want you to act. This is very important. यानी जिस तरह एक बहुत अच्छा स्पीकर जो है वो अपने ऑडियंस को हंसाता है, रुलाता है, उनके अंदर एक खास जज्बा पैदा करता है, इसी तरह गुड कम्युनिकेटर, एक स्पीकर, पब्लिक स्पीकर जो है वो भी इज अ गुड कम्युनिकेटर. इसी तरह किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक राइटर जो है, एक मैनेजर जो है, ही इज अ गुड राइटर ऑफ हिज मैसेजेस, ही इज अ गुड कम्युनिकेटर. तो वो जो चाहता है वो कर देता है. Obviously, you are not always writing letters that are agreeable to your reader, but it is you कि जिसने अपने मैसेजेस को अपने रीडर के लिए एक्सेप्टेबल बनाना, इस तरह एक्सेप्टेबल बनाना कि वो आपकी लॉजिक को समझने के लिए तैयार हो जाए कि जो आप कह रहे हैं दैट इज द ओनली सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम. तो गुड कम्युनिकेटर जो है ये एक तरह से कंट्रोल कर रहे हैं, लाइक द कैप्टन ऑफ द टीम अपने तमाम प्लेयर्स को मूव करा रहे होते हैं कि कौन से प्लेयर ने किधर से क्या एक लगानी हो तो उसके नतीजे में बॉल जो है वो किधर जाना है. तो गुड कम्युनिकेटर हैव कंट्रोल ओवर देयर कम्युनिकेशन प्रोसेस. द नेक्स्ट परफेक्ट थिंग इज congeniality. They maintain friendly player relation with you regardless of whether you agree with them. Good communicator demand your response and goodwill. You are willing to work with them again despite their differences. यानी वही बात कि जो हमने कंट्रोल में की थी कि आप गुड कम्युनिकेटर के साथ एग्री करें या ना करें, बट यू स्टिल बिलीव, आप उनके साथ अब भी उनके ऊपर यकीन रखते होते हैं. तो गुड कम्युनिकेशन जो है ये उस वक्त आती है कि जब एक कम्युनिकेटर जो है वो इन तमाम बातों को ज़हन में रखे. उसके यहाँ उसकी क्वालिटीज़ में परसेप्शन होना चाहिए, प्रिसीजन होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, दे शुड बी बिलीवेबल, और कंजीनियलिटी है ये होनी चाहिए. ये क्वालिटीज़ जब किसी भी कम्युनिकेटर के अंदर पैदा हो जाती है तो उसकी कम्युनिकेशन जो है वो सक्सेसफुल होना शुरू हो जाती है. यानी अपनी कम्युनिकेशन को सक्सेसफुल करने के लिए आप जो वर्क प्लेस में जहाँ भी काम कर रहे हैं आपको अपने आप को आगे ले जाना है. यू नीड प्रमोशन, यू नीड ऑल द फ्रिंज बेनिफिट दैट आर अवेलेबल. उन तमाम को हासिल करने के लिए द की इज टू डेवलप इन यू ऑल दीज क्वालिटीज, ऑल दीज ट्रेड्स. ये वो सलाहियतें आपके अंदर होंगी तो आप कम्युनिकेशन जो है वो बहुत बेहतर तरीके से कर सकेंगे. अब आइए देखते हैं कि एक मैसेज को कम्युनिकेट करने के लिए हम क्या प्लानिंग करते हैं. हाउ कैन वी मेक अ केयरफुल प्लानिंग टू टॉक आउट अवर मैसेजेस. मैसेजेस जब हम कहते हैं तो दे इंक्लूड बोथ ओरल एंड रिटन मैसेजेस. Whenever you are creating the message, you need to create them very carefully and you need to take care of two things. Number one, give your audience a framework for understanding the ideas you communicate. जब भी आप एक मैसेज लिख रहे हैं तो आपका मैसेज जो है वो आपके रीडर को एक खास फ्रेमवर्क के अंदर ले जाना चाहिए. वो मैसेज इसके लिए जरूरी है आप कोई ना कोई उसके बारे में इन्फॉर्म करें. यानी टेल द रीडर इन द बिगिनिंग दैट व्हाट योर मैसेज इज अबाउट. तो आपका मैसेज जो है वो किस बारे में है. अपने मैसेजेस को प्लान करते वक्त ये सोचिए कि जब आपका रीडर उसको पढ़ रहा होगा तो उसका फ्रेम ऑफ माइंड जो है वो क्या होगा, उसको कैसे आप अपने मैसेज को रिलेट करेंगे पास्ट एक्सपीरियंसेस के साथ. जैसे आप कोई जॉब के लिए एडवर्टाइजमेंट के ऊपर आप कोई एप्लीकेशन लिखते हैं तो आप नॉर्मली आप क्या करते हैं कि यू गिव रेफरेंस विद रेफरेंस टू द एडवर्टाइजमेंट. इसी तरह जब आप कोई स्पाइस को ऑर्डर जो है वो प्लेस कर रहे हैं आप क्या करते हैं, आपने पीछे जो लेटर लिखा होता है उसका रेफरेंस देते हैं. मिसाल के तौर पे आपने लेटर रिसीव किया था जिसमें आपके रीडर ने आपको ये मैसेज दिया था कि फलां जो स्पाइस है वो उसके यहाँ अवेलेबल है. अब यू नीड टू मेक द रेफरेंस के थैंक यू वेरी मच फॉर योर लेटर ऑफ डेटेड सो एंड सो. लेटर का नंबर जो है वो दिखने हैं. ये नंबर लिखने का इसीलिए मकसद होता है कि हम रेफरेंस जो है उनको जहन में रख सकेंगे कि किस रेफरेंस से बात कर रहे हैं. तो केयरफुल प्लानिंग करते वक्त फ्रेम ऑफ माइंड का होना कि अपने रीडर को एक फ्रेम ऑफ माइंड जो है वो देना वो बहुत जरूरी है. दूसरी चीज़ जो है वो है टू मेक योर मैसेज मेमोरेबल. यूज वर्ड्स दैट इवोक अ फिजिकल सेंसरी इंप्रेशन. यूज टेलिंग स्टैटिस्टिक्स. नहीं, आपको अपने मैसेजेस को रीडेबल बनाना.
ज़रा सोचें कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपका रिसीवर जो है वो बैठा है, वो रिसीवर जो है वो बहुत से काम कर रहा है, बहुत से मैसेज जो है वो हर वक्त उसको कंप्लीट कर रहे हैं, बहुत सी चीज़ें जो है उसने पढ़नी है। इस सूरत में किसी एक मैसेज को इस काबिल बनाना कि वो रिसीवर या रेसिपिएंट के जहन में जाके उतर जाए, बैठ जाए, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने मैसेज में ऐसी जो फिजिकल अपील जो है वो ऐसी बनाएं और फैक्ट्स को इस तरह आप स्टैटिस्टिकली बयान करें कि वो एक दफ़ा पढ़ने के बाद वो फैक्ट्स जो है या वो जो डिटेल है वो उसके जहन में, आपके रीडर के जहन में बैठ जाए। तो इसके लिए हमेशा ये याद रखें कि आपने अपने रीडर को स्ट्रेन नहीं दें, यानी लैंग्वेज इतनी सिंपल होनी चाहिए, बातें इतनी स्टैटिस्टिकली बयान हुई होनी चाहिए कि आपका रीडर एक दफ़ा उनको पढ़े और उसके बाद वो उसको महसूस हो जाए कि आप क्या चाहते हैं। तो सक्सेसफुल जो कम्युनिकेटर हैं वो इस बात का ख्याल रखते हैं कि उनके मैसेज जो है दे शुड बी मेमोरेबल विद द रीडर, कि एक दफ़ा उन्होंने मैसेज को पढ़ लिया तो उसके बाद उनके जहन में हो कि उन्होंने क्या मैसेज जो है वो आपका पढ़ा है। तो ये प्लान करते वक्त इस बात का ख्याल रखें, टू मेक योर मैसेज मेमोरेबल। नेक्स्ट थिंग इज द की टू ब्रेविटी इज टू लिमिट द नंबर ऑफ आइडियाज़। हमेशा याद रखें जब आप कोई भी लेटर लिखने जा रहे हैं तो लेटर का बेसिक आइडिया जो होता है वो एक होता है, अगर फिर उस एक आइडिया की मुख्तलिफ आगे फॉर्म्स जो हैं वो चलती रहती हैं। यानी आपने अगर कोई किसी स्प्लाइस का ऑर्डर देना तो हो सकता है आप एक ही वक्त में बेशुमार चीज़ों के बारे में स्प्लाइस ऑर्डर दे रहे हो, लेकिन वो तमाम आइडियाज़ जो हैं वो इस तरह बयान की जाए कि वो उस एक मेन आइडिया के ही मुख्तलिफ अज्जा लगे। ये नहीं होना चाहिए कि आप अपनी बात जो है वो इस तरह करें कि एक बात अलग महसूस हो और दूसरी बात अलग महसूस हो। द बेस्ट वे टू कंट्रोल दिस सिचुएशन इज दैट first you make a rough draft of your message and see that whether it conveys what you want to convey, and see the response in your mind, making a mental picture, a meeting of the mind, that how is the recipient going to take your message. इसके लिए वही है कि आप ड्राफ्ट बनाएं, उसको लिखें, और whenever you feel necessary it's important to number your sub ideas, कि अपने सब आइडिया जो है वो नंबर दे दें ताकि रेसिपिएंट जो है जब उनको मैं पढ़ रहा हो तो वो पढ़ते पढ़ते उनको उसको आसानी के साथ तय कर सके कि ये किससे रिलेट करते हैं। तो केयरफुल प्लानिंग में ये एक अहम चीज़ है कि रिस्ट्रिक्ट योर आइडियाज। आमतौर पर लेटर को ज़्यादा लेंथी बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। नॉर्मली लेटर जो है एक पेज का होता है, समटाइम इट गोज टू 2 पेजेस, बट नॉर्मली मैसेजेस जो है वो एक पेज के होते हैं। और अगर आप इसको लेंथी बनाना चाह रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि वो स्ट्रेनिंग ना हो रीडर के लिए, उसको इस डिवाइस के साथ इस तरह उसके नंबर लगा दें कि जिसके नतीजे में रीडर आपके मैसेज को पढ़ सके। इसकी अगली चीज़ जो है वो है टाई द मैसेज टू योर ऑडियंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी अपने मैसेज को अपने ऑडियंस के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जरूर मिला दें। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी कहा कि इफ़ यू आर मेकिंग एन ऑर्डर फॉर नीडेड सप्लाई तो गिव अ प्रीवियस रेफरेंस। आप कोई कंप्लेंट लेटर लिखना जा रहे हैं तो कंप्लेंट लेटर में आप ज़रूरी है कि आप मेंशन करें कि कब आपको कौन से ऑर्डर की आप बात कर रहे हैं, कौन सी चीज़ों की आप बात कर रहे हैं जिनको ऊपर आप कंप्लेंट लिखने जा रहे हैं, वो रिसीट नंबर को दें, डेट दें, ताकि जब आपका रीडर उसको पढ़ रहा हो तो उस रेफरेंस को वो अपने जहन में रखे हुए हो। इसी तरह अगर आपको एडजस्टमेंट लेटर जो है वो लिख रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि आप कंप्लेंट लेटर का हवाला दें। इन लेटर के नंबर्स और डेट का जो रेफरेंस आमतौर पर कम्युनिकेशन में दिया जाता है, ये इस एतबार से बहुत ज़रूरी है कि हमारे रीडर के को एक रेफरेंस के तौर पर होता है कि जिससे वो पास के साथ उसको रिलेट करते हैं कि अब बात जो है वो किस टॉपिक में होती है। तो ये केयरफुल प्लानिंग में ये एक अहम एलिमेंट है। अगली चीज़ जो है बाय हाईलाइटिंग एंड समराइजिंग की पॉइंट्स यू हेल्प योर ऑडियंस अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर द मैसेज। सो बाय हाईलाइटिंग एंड समराइजिंग योर पॉइंट, कि जब आप महसूस करते हैं कि आपके पॉइंट जो है वो एक से ज़्यादा है तो आप हाईलाइट कर दें, यानी कहीं बोल्ड लफ्ज़ों को बोल दे दें, उनकी हेडिंग कर दें, अंडरलाइन कर दें, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं या जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो इन्फॉर्मेशन है जो आप दे रहे हैं उसको अंडरलाइन कर दें। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने मैसेजेस को बेहतर तरीके से टॉप कर सकते हैं अपने रीडर के लिए। तो दूसरी चीज़ जो सक्सेसफुल कम्युनिकेटर बनने की है कि ऑलवेज प्लान योर मैसेजेस वेरी केयरफुली, कि आप अपने मैसेजेस को बड़ी केयरफुली प्लान करें और केयरफुली प्लान करते वक्त उनको मेमोरेबल बनाएं, जो आइडियाज़ हैं उनको लिमिट करें और चीज़ें जो है उनको समराइज़ करें, हाईलाइट करें। ये तमाम चीज़ें जो है ये बार बार दोहराने का अमल है। अगर ये चीज़ों को बार बार रिपीट करना जो है वो समटाइम क्रिएट बॉर्डम, खासतौर पे जब आप ऑरल कम्युनिकेशन में हो तो किसी चीज़ को रिपीट करना, लेकिन एक कामयाब कम्युनिकेटर जो है वो चीज़ों को इस तरीके से रिपीट करता है कि वो बॉर्डम भी क्रिएट नहीं करती, मोनोटनी भी क्रिएट नहीं करती और आहिस्ता आहिस्ता अपने सुनने वाले अपने ऑडियंस के जहन में उतरती चले जाती है। ये किसी भी टॉपिक के ऊपर जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पे हम इस बिजनेस कम्युनिकेशन को पढ़ रहे हैं तो इसमें कम्युनिकेशन के हवाले से हम चीज़ें बार बार लाते हैं। एक तरह से हम एक बिहेवियर जो है वो क्रिएट कर रहे हैं, यानी कम्युनिकेशन जो है इट्स अ लर्निंग ऑफ अ बिहेवियर, यानी एक बिहेवियर को आप सीखने का अमल है कि आप एक ऐसे फ्रेम ऑफ माइंड में आ जाते हैं कि जिसमें आप जब कम्युनिकेट करने लगते हैं तो आप अपना और अपने रीडर का दोनों का ख्याल रखते हैं। आप क्या चाहते हैं और आपका रीडर क्या चाहता है, इन दोनों को जहन में रखते हुए आप अपने मैसेजेस जो है वो हर तरह के वर्बल नॉन वर्बल मैसेजेस जो है वो क्रिएट करते हैं और ये मैसेजेस जो है वो आपके बहुत सक्सेसफुल होते हैं। एंड दिस इज व्हाट मेक यू सक्सेसफुल एंड स्किल कम्युनिकेटर। सो प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लानिंग जैसे आपने राइटिंग प्रोसेस में ये बात जिक्र किया, डिस्कस की गई होगी आपसे, दैट राइटिंग इज ऑल्सो अ प्रोसेस, यानी इट इज नॉट सो दैट यू हैव एन आइडिया एंड यू हैव स्टार्टेड राइटिंग ओवर द आइडिया। ये बात नहीं होती कि आपके पास एक आइडिया और आपने उस आइडिया के ऊपर लिखना शुरू कर दिया। बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जो किसी ख्याल को एक ही दफ़ा लिखने के बाद आखिरी महसूस करते हैं। आमतौर पे हम सब किसी ख्याल को जब महसूस करते हैं उसके बाद उसको लिखते हैं, तो लिखने के बाद हम देखते हैं कि इसमें से कई चीज़ें जो हैं वो गैर अहम है और कई चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर शामिल करना। तो एक गुड कम्युनिकेटर जो है वो जब भी अपने मैसेजेस जो है वो कम्युनिकेट करना चाह रहा होता है तो वो बहुत केयरफुली उनको प्लान करता है, अपने पॉइंट्स को लिखता है, उनको देखता है कि कौन से पॉइंट जरूरी है, कौन से पॉइंट गैर जरूरी है, और इसके लिए ये है कि कैसे वो अपने आप को इस काबिल बना सकता है कि जब भी वो अपने मैसेजेस जो है वो क्लियर करे तो उसके मैसेजेस जो है वो सक्सेसफुल हो, वो समझ आए। अब आफ्टर हैविंग डिस्कस्ड ऑल दी ट्रेट्स and after discussing that how can we communicate, plan our messages, the next thing comes to overcome the barriers, यानी barriers को कैसे overcome करता है। barriers के बारे में हमने बहुत गुफ्तगू की है कि एक सक्सेसफुल कम्युनिकेटर होने के लिए किन किन barriers को पहले अंडरस्टैंड करना जरूरी है और फिर after having understood them कैसे
हम इनको अपनी कम्युनिकेशन से ख़त्म कर सकते हैं या मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट व्हेनेवर यू आर राइटिंग एनी मैसेज, बी श्योर कि आपका जो मैसेज है, आपका रिटन मैसेज जो है, वो उसकी कोई ऐसी बात, उस पेपर की कोई ऐसी बात या उसकी मार्जिन है या कोई दूसरा ऐसा नॉन वर्बल क्लू जो आमतौर पे रिटन मैसेजेस में जाता है, वो डिट्रैक्ट ना करे आपके रीडर को। इसी तरह व्हेनेवर यू आर प्लानिंग एनी ओरल मैसेजेस, तो बी श्योर कि आपके ओरल मैसेजेस जो हैं वो आपके ऑडियंस को बिल्कुल वाज़ेह तरीके से समझ आए। जैसे आपकी एज स्पीकर आपकी विजिबिलिटी जो है, इट शुड बी क्लियर टू योर ऑडियंस। आपकी साउंड, आपकी आवाज़ जो है, इट शुड बी क्लियर, दे शुड लिसन टू यू वेरी केयरफुली। नेक्स्ट थिंग इज फीडबैक, यानी अगली चीज़ जो है वो फीडबैक है। फीडबैक इज द रिस्पॉन्स दैट यू गेट फ्रॉम योर रिसीवर ऑफ योर मैसेज, यानी आप अपने मैसेज के रिसीवर से जो रिस्पॉन्स हासिल करते हैं उसको हम फीडबैक। एक गुड कम्युनिकेटर जो है वो अपनी रिस्पॉन्स जो है उसको भी कमांड करता है, यानी वो अपने रिसीवर से अपनी इस रिस्पॉन्स को कमांड करता है। तो इस सिलसिले में ऑलवेज रिमेंबर दैट मेक फीडबैक मोर यूजफुल बाय, यानी अपने फीडबैक को ज़्यादा यूजफुल बना सकते हैं बाय नंबर 1 प्लानिंग हाउ एंड व्हेन टू एक्सेप्ट इट, यानी इस चीज़ को प्लान करके कि आप अपने फीडबैक को कब लेना चाह रहे हैं, एक्सेप्ट कब करना चाह रहे हैं। अब आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, उस इन्फॉर्मेशन को आपको पता होना चाहिए कि व्हेन डू यू नीड दैट इन्फॉर्मेशन, आपको 1 वीक में चाहिए, 2 वीक में चाहिए या कब चाहिए। फॉर एग्जांपल इफ़ यू नीड द इन्फॉर्मेशन इमीडिएटली, उसके लिए आपको कौन सा चैनल इस्तेमाल करना है। सिंपल है, फेस टू फेस मीटिंग आप करेंगे, तो टेलीफोनिक मैसेज जो है वो आप देंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने अपना फीडबैक जो है वो कब लेना है। तो आपको प्लान करना है कि आप अपने फीडबैक को फौरी तौर पे ले सकें। इसी तरह अगर आप रिटन मैसेजेस लिख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपने अपना फीडबैक जो है वो कब लेना है। आप उसमें मेंशन करें कि बाय 16 ऑफ दिस मंथ, 17 ऑफ दिस मंथ, इन 1 वीक और इन 2 वीक यू नीड दैट इन्फॉर्मेशन। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने फीडबैक को खुद कंट्रोल करें। द नेक्स्ट थिंग इज बीइंग रिसेप्टिव टू योर ऑडियंस रिस्पॉन्सेज, यानी अपने ऑडियंस के रिस्पॉन्स को रिसेप्टिव, आपका ऑडियंस जो होगा वो कैसे रिस्पॉन्स करेगा इसके बारे में आपको बड़ा रिसेप्टिव होने की जरूरत है। द नेक्स्ट थिंग इज encourage frankness. Encouraging frankness in feedback is very important. For example, you have given some instruction to your employees or any of your subordinates, and they send you some part of the information which is positive, and they hold other part of the information that is negative. So, what do you get in this way? You do not have the whole picture, the complete picture. ऐसी सूरत में you cannot function properly. यानी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है लाजमी नहीं है कि that is always positive. Sometimes it's negative, but you have created such a picture of yourself with your subordinates that they fear you. आपने अपने बारे में खौफ पैदा कर दिया हुआ है कि वो उनको आपसे खौफ आता है कि अगर आपने कोई उनकी कोई गलती पकड़ ली या कोई नेगेटिव इन्फॉर्मेशन आप तक पास ऑन हो गई तो दे विल बी ब्रॉट टू बुक, उनको सजा दी जाएगी। ऑब्वियसली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दोनों तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो होती है, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। एंड बीइंग ए सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन और बीइंग ए सक्सेसफुल कम्युनिकेटर यू नीड इन्फॉर्मेशन ऑफ बोथ टाइप। आपको नेगेटिव इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए और पॉजिटिव। इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी उनको पता हो कि आप जो है वो हर तरह की इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार। इसके लिए यू हैव टू क्रिएट एन ओपन कम्युनिकेशन क्लाइमेट, यानी एक ऐसा क्लाइमेट कम्युनिकेशन का बनाना होगा ऑर्गेनाइजेशन में कि जिसमें आपके सबऑर्डिनेट्स जो हैं वो फ्रैंकली ऑनेस्टली आपको आके हर तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो पास ऑन कर सके। याद रखिएगा कि कम्युनिकेशन जो है इसमें ज़िंदगी और मौत दोनों साथ साथ चलते हैं। आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से मुंसलिक हो सकते हैं कि जिसमें किसी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन का आप तक पहुंच जाना बहुत सी जिंदगियों के ऊपर को बचाने का बायस बन जाए। तो बी वेरी श्योर दैट यू हैव क्रिएटेड सच अ frank atmosphere in the whole organization that people feel free to come to you and discuss every type of information and send you every type of information. So the next thing in this regard is using it to improve communication. A lot of time you have to write messages and the response that you receive is not positive. I mean, you receive a message that the information or the message that you send was not properly understood by your recipient. In this situation, you can become sometimes very angry that why the recipient has failed to understand you. But on the other hand, this situation has given you a chance to improve your communication. Instead of repeating the same thing a little louder, यानी बजाय इसके कि उसी चीज़ को आप ज़रा ऊंची आवाज़ में कहें, cool down and think for a moment कि आपने जो चीज़ कही थी क्या उस चीज़ को किसी और तरीके से कहना पॉसिबल है। I'm sure that you'll find that there are certain other ways through which you can say the same thing. हो सकता है कि the way you communicated was not the correct way. हम हमेशा ठीक नहीं होते। A lot of time we are on the other side of the fence. लेकिन अपने अंदर ये एहसास पैदा करना, ये सोचना कि मैं भी गलत हो सकता हूँ, ये एक अच्छे कम्युनिकेटर के लिए बहुत ज़रूरी है। यानी एक अच्छा कम्युनिकेटर जो है वो इज ऑलवेज रेडी टू एक्सेप्ट हिज फॉल्ट्स, हिज मिस्टेक। ही इज लाइक अ गुड ह्यूमन बीइंग, एक ऑनेस्ट आदमी की तरह है कि जो हमेशा तैयार रहता है उसे अपनी बात जो है वो कन्वे करनी है। ही हैड टू गेट हिज मैसेज अक्रॉस। इफ ही हैज फाउंड दैट ही हैज फेल्ड इन वन वे, ही एडॉप्ट्स, ही टेक्स अनदर रूट टू रीच हिज डेस्टिनेशन। यानी जब आपके सामने अपना मकसद हो कि आपने अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना है, तो उस सूरत में अगर कोई बैरियर आ गया, हो सकता है आपने बहुत अच्छी तरह एक बात जो है उसको कम्युनिकेट किया, लेकिन आपका रिसीवर जो है उसको परसीव करने में नाकाम हो गया, तो इस सूरत में यू नीड नॉट बी एंग्री, आपको गुस्से में आने की जरूरत नहीं है। जस्ट कूल डाउन एंड रीफ्रेज योर मैसेज, अपने मैसेज को रीफ्रेज करें। तो फीडबैक जो है ये आपको हेल्प करता है एक किस तरह आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हो सकते हैं, आप अपने मैसेजेस को किस तरह बेहतर बना सकते हैं, आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो उसको कैसे आपको हासिल हो सकती है, आप कैसे इस प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो वी हैव टुडे डिस्कस दैट व्हाट आर द ट्रेड्स ऑफ अ गुड कम्युनिकेटर, अ स्किल कम्युनिकेटर, यानी एक गुड कम्युनिकेटर की ट्रेड्स क्या है, एक स्किल कम्युनिकेटर की ट्रेड्स क्या है, कैसे हम एक स्किल कम्युनिकेटर बन सकते हैं, जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव है इस सब्जेक्ट को स्टडी करने का। रिमेंबर दैट बिजनेस कम्युनिकेशन इज लाइक साइकोलॉजी, कि जो आपको माइंड रीडिंग सिखाती है, ना सिर्फ अपना माइंड पढ़ना बल्कि अपने मुखातिब का माइंड पढ़ना, अपने रेसिपिएंट का माइंड पढ़ना।
कि आप समझ सकें कि जो बात आप कहना चाह रहे हैं वो बात जो है वो क्या है, और जो बात दूसरा शख्स कहना चाह रहा है वो क्या है। तो with inculcating all these traits in yourself, you can be a good and skilled communicator. आप एक अच्छे communicator जो है वो बन सकते हैं। फिर to make your communication successful, आपको कैसे उनको plan करना चाहिए? What care is needed to plan your messages? How can you minimize the barriers? We don't say that eliminate, यानी barriers को खत्म करना मुमकिन नहीं है। आप बहुत खूबसूरत अंग्रेजी में तो मैसेज लिख सकते हैं, बहुत काबिल फहम, लेकिन हो सकता है कि दूसरा रेसिपिएंट जो है उसके यहाँ कोई प्रॉब्लम हो, तो मिनिमाइज कर सकते हैं आप बैरियर्स को। यू कैन मिनिमाइज द बैरियर्स कि आपकी बात जो है उसको ज़्यादा तौर पे समझा जा सके। फिर इसी तरह यह है कि आप फीडबैक को कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं, फीडबैक आपके लिए क्या काम कर सकता है। तो इसके साथ ही हमारा ये जो टॉपिक है व्हाट इज़ कम्युनिकेशन और व्हाट इज़ बिजनेस कम्युनिकेशन, ये खत्म हो जाता है। यानी इसमें याद करें कि हमने स्टडी किया है व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन विद रेफरेंस टू ग्लोबलाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, एंड देन द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड देन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। एंड टुडे वी हैव डिस्कस्ड दैट हाउ कैन वी बिकम गुड कम्युनिकेटर्स, कि हम कैसे अच्छे कम्युनिकेटर जो है वो बन सकते हैं। अब इस तमाम टॉपिक को डिस्कस करने के बाद अब जरा देखें कि हम यानी अपने नॉलेज का, अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक को देखें कि क्या हम इस टॉपिक को अंडरस्टैंड कर सके हैं। हैव वी बीन एबल टू अंडरस्टैंड द टॉपिक? लेट्स बिगिन फ्रॉम द कम्युनिकेशन। सो इफ यू आर आस्क्ड टू डिफाइन व्हाट इज कम्युनिकेशन, कैन यू डिफाइन इट? इफ यू कैन जस्ट टेक इट डाउन, यानी लिखें इसको अपनी जरा कॉपी में कि व्हाट इज कम्युनिकेशन, व्हाट इज बिजनेस कम्युनिकेशन। यानी बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है? सिंपली आप इन चीज़ों को डिफाइन करना सीखें कि कैसे आप इसको डिफाइन करेंगे। उसके बाद फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन के हवाले से जरा कि फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो हाउ डज इट वर्क, यानी हाउ डू वी कम्युनिकेट इंटरनली, व्हाट आर द चैनल्स अवेलेबल टू अस, यानी हमें कौन से चैनल जो है वो अवेलेबल है। मिसाल के तौर पर अगर आपने अपने किसी नई प्रोडक्ट को लॉन्च करना है तो किस चैनल को आप अडॉप्ट करेंगे और क्यों करेंगे? कौन सा चैनल जो है वो अफेक्टिव होगा और कौन सा चैनल जो है वो अफेक्टिव नहीं होगा? तो इसको जरा सोचें। एक्सटर्नली कम्युनिकेट करने के लिए आपके पास कौन कौन से चैनल हैं, यानी आप जब किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हो तो आपके पास कौन कौन है वो अवेलेबल है फॉर रिटन कम्युनिकेशन एज वेल एज फॉर ऑरल कम्युनिकेशन। रिटन और ऑरल कम्युनिकेशन के लिए आपके पास कौन से चैनल जो है वो अवेलेबल है, इसको देखें। इसी तरह ये जरा सोचें कि एक ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, यानी कोई ऑर्गेनाइजेशन ले लें, यानी पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन ले लें और उसमें देखें कि एक इन्फॉर्मेशन का सिस्टम क्या है, ऑरल इन्फॉर्मेशन का या ऑरल कम्युनिकेशन का सिस्टम क्या है और रिटन कम्युनिकेशन जो है वो इसका सिस्टम क्या है। इसको जरा स्टडी करें। आई एम श्योर कि ये जो स्टडी आप करेंगे आपके इस कम्युनिकेशन के जो नॉलेज है उसको बहुत ज़्यादा एनहांस करेगा। आपको पता लगेगा कि कम्युनिकेशन कैसे वर्क करती है किसी ऑर्गेनाइजेशन में। मे बी यू आर ऑलरेडी वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम को जरा स्टडी करें। कौन से चैनल जो है वो ज़्यादा यूज़ होते हैं और कौन से चैनल जो है वो कम यूज़ होते हैं, इसको स्टडी करें। इसी तरह देखें कि सिम्बल्स की क्या अहमियत है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सिम्बल्स इन कम्युनिकेशन। कन्वेंशन ऑफ मीनिंग के हवाले से कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो जार्गन है किसी भी उसको अंडरस्टैंड करना क्यों जरूरी है, कैसे हम अपने लफ्ज़ों को ज़्यादा विविड, क्लियर, अंडरस्टैंडेबल बना सकते हैं। अगर किसी डिक्शनरी को खोलें और लफ्ज़ों को ज़रा रीड करें कि लफ्ज़ जो है वो किन लेवल्स पे इस्तेमाल होते हैं। इनफॉर्मल वर्ड्स को देखें, लिखा होता है डिक्शनरी में, तो लफ्ज़ जो है इस मायने में फॉर्मल है और इस मायने में इनफॉर्मल है। आमतौर पर हम लोग जो है वो इस बात का ख्याल नहीं रखते। एक अच्छा कम्युनिकेटर जो है वो ना सिर्फ ये कि वो सेंटेंस स्ट्रक्चर से बहुत अच्छी तरह वाकिफ होता है, बल्कि वो ज़ुबान लफ्ज़ का इस्तेमाल जो है उससे भी बहुत अच्छी तरह वाकिफ होता है। और अच्छा कम्युनिकेटर जो है वो एक डिक्शनरी को रेफरेंस के तौर पर बार बार इस्तेमाल करता है। ये बात याद, ये आपको बहुत हेल्प कर सकती है कि आप कैसे ये जो बैरियर ऑफ सेमेंटिक्स है इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। इसी तरह इन्फ्रेंसेस या एब्स्ट्रैक्शन करते वक्त ख्याल रखें कि इन्फ्रेंसेस क्या है, कौन सी चीज़ महज फैक्ट है, कौन सी चीज़ इन्फ्रेंस है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। जब भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो तो इस बात का ख्याल रखें कि आपके कम्युनिकेटर की क्या वैल्यूज़ हैं, उसके क्या एटीट्यूड है, वो उस वक्त किस फ्रेम ऑफ माइंड में वो आपसे कम्युनिकेट कर रहा है। तो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। यू ऑल्सो नीड टू हैव अ वेरी क्लियर नॉलेज ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में देखें, पहले अपने बारे में देखें कि आप अपनी कोई नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के 3 एस्पेक्ट वगैरह लिखें कि कौन कौन सी है। ऐसे बोलते वक्त आप क्या करते हैं, आपके कौन सी मूवमेंट जो है वो हो रही है, बॉडी मूवमेंट कैसे हो रही होती है, आपके फिजिकल अपीयरेंस के बारे में दूसरा आदमी क्या सोच रहा था, आपके आर्टिफैक्ट्स जो है उसके बारे में क्या सोच रहा था, किस एनवायरनमेंट में आप बात कर रहे होते हैं। किसी खास एक पॉइंट पे अपने आप को पिक करें और उसके बाद उसको लेकर जरा लिखें। सो हमने कम्युनिकेशन के हवाले से एक गुफ्तगू की है, जैसे कि हमने आपको पहले लेक्चर में कहा था कि इस सब्जेक्ट में हम जो एक्सपर्ट हैं उनसे भी आपको मिलवाएंगे। तो हमने गुफ्तगू की है और देखते हैं कि कम्युनिकेशन के मुख्तलिफ जो टॉपिक्स हमने स्टडी किए हैं इसके हवाले से वो क्या कहते हैं। What is the importance of communication? Which academic disciplines are important to be good communicator? Communication is the lifeblood of any organization. Whenever a few people get together to achieve some combined objective or objectives, communication is of the essence. As they say, it can really make or break the situation. From the earliest times, for instance, in Greek civilization, in the Roman Senate, to modern organizational structures, complex modern organizational structures, communication is one of the most important factors that ensures the success of any organizational activity. Just to give you an idea of how important this area is, recently a survey was conducted on about 500 top-notch managers in business organizations, highest-level business organizations in the US. And the top managers were asked to identify some of the areas which they thought were important in their success. And
In the rungs of the ladder to success, communication was at the top. Interestingly, hard work was at the lowest rung, by no means unimportant, yet far more than hard work, far more than your technical competence, is the power of how you communicate your ideas and how well you understand ideas of others is going to determine how successful a manager or a person working with others you're really going to be. Similarly, in the academic setting, you'll be surprised to know that in a recent survey by Fortune magazine, about almost all the schools had communication skills as one of the highest priority subjects in their MBA programs, followed by a second language, which again is communication skills in some way. So not only in professional settings, but also in academic settings, your success is largely going to depend on your communication. If you have time, I can give examples of how this really works. What are the areas important for every student of communication? Well, that's an interesting question, Shakil, because it's a growing field, and unfortunately here in Pakistan, despite immense importance of the subject, there are very few experts with devoted themselves to fully understand of this subject. In many areas, and if one were to talk about some of the important ones, one would begin by talking about effective listening and effective reading, which of course takes us at a deeper level into criticism of text and source analysis, hermeneutics, which is the art and science of interpretation, which by the way has become a very important discipline in the Western social sciences and humanities stream, even in law, where you have something like legal hermeneutics, where you try to understand how texts are understood and interpreted by people. And then in effective listening, there's this concept of empathy and emotional intelligence, which was popularized by Daniel P. Goleman in his famous book, Emotional Intelligence, Why It Matters More Than IQ. Since then, there's a lot of emphasis on developing concepts of empathy and in understanding how other people behave and enabling the person to interact with other people in a more congenial, effective manner. And then when you move on, you also talk about how effective you are as the sender of a message. As a speaker, for instance, as a writer, for instance. And again, you have to worry about different kinds of communication situations because it's a very contingent, very contingent kind of discipline. As a public speaker, you obviously require different kinds of techniques for the delivery of the message, for eye contact, for voice control, which are things that obviously are important in any kind of speaking, but the rules keep changing. Similarly, in writing, we talk about professional context, business context, which can have their own rules. For instance, in the business context, you have more emphasis on informal, effective, cogent writing, as opposed to academic writing, which is or research writing, which has its own norms, and there's more emphasis on plagiarism, which is borrowing ideas or opinions or styles of others without proper acknowledgement and citation standards, which you have to keep in mind. Also, there's a certain approach and a certain methodology which has to be reflected in your writing. So these are some of the areas which one needs to obviously focus on, and they all come within the ambit of communication skills. However, in Pakistani universities, in communication skills, generally people pay more attention. Professors and academics pay more attention to oral communication. How can the students of this subject improve themselves? Well, there is no short answer to this question. Obviously, it requires some study of useful texts, which are available in good libraries. For instance, most universities in Pakistan use texts as effective business communication by Dan Murphy or communication by Bowley and Till, and there are other useful texts available as well. But much more needs to be done to really become a good communicator when it's reading texts on it. It requires participation, it requires supervision, it requires interaction and above all, it requires practice. So I would say, if I were to give a short answer to this question, I would say a good idea would be to read these texts and to choose the kind of communicator from the media, from your professional settings, the kind that you would like to become, and try and study that person. And through more and more interactive practice, you will gain the confidence and apply the skills that you've learned in terms of making yourself a more effective communicator. So, आपने गुफ्तगू सुनी और आपने जो टॉपिक बिजनेस कम्युनिकेशन है इसके हवाले से ये एक बातें जो हम इस तमाम लेक्चर्स के सिलसिले में कहते रहे हैं जिनके साथ उनको जरूर रिलेट किया होगा और आप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक जो है उसमें भी आई एम श्योर दैट इंक्रीज कि कैसे आप अपने आप को बेहतर कम्युनिकेटर जो है वो बना सकते हैं। तो इसके साथ हमारा ये आज का जो लेक्चर खत्म होता है और इसी तरह ना सिर्फ लेक्चर बल्कि पीछे जो पहले लेक्चर से हमने कम्युनिकेशन के हवाले से गुफ्तगू की थी उसका सिलसिला भी जो है वो खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम नए टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू करेंगे, यानी प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन के क्या प्रिंसिपल्स हैं और इनको कैसे हम अपने अंदर इनको कैसे ठीक कर सकते हैं। हमारा मकसद वही है कि बिकम अ स्किल एंड सक्सेसफुल कम्युनिकेटर। थैंक यू वेरी मच। आज का लेक्चर खत्म करते हैं। खुदा हाफिज़। सो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो हो गई कंप्लीट। हम चलते हैं अपने रीडिंग की तरफ। रीडिंग कर लेते हैं। व्हेन इंट्रोडक्शन, व्हेन यू लर्न हाउ टू ओवरकम मोर एंड मोर communication barriers, you become more and more successful as a business communicator. Think about the people
credibility. They are believable. They have faith in the substance of their message. You trust their information and their intentions. Control. They shape your response depending on their purpose. They can make you laugh or cry, calm down, change your mind, or take action. Okay, congeniality. They maintain friendly, pleasant relations with you, regardless of whether you agree with them. Good communicators command your respond and goodwill. You are willing to work with them again despite their differences. Effective communication overcomes the main barriers to communication by creating their message carefully, minimizing noise in the transmission process and facilitating feedback. Okay, careful creation of the message. The best way to create message is to focus on your audience so that you can keep them understand and accept your message. You want to create a bridge of words that leads audience members from their current position to your point of view. If you are addressing strangers, try to find out more about them. If that is impossible, try to project yourself into their position by using more common sense and imagination. Then you will be ready to create your message. Give your audience a framework for understanding the ideas you communicate. Tell your audience at the outset what you expect from your message. Let them know the purpose of your message, even not revealing controversial ideas at the beginning of your message. You can give them a preview of the topic. To make your message memorable, use words that evoke a physical sensory impression. Use telling statistics. Balance general concepts. Balance general concepts with specific illustrations. Most memorial words are one that creates a picture in your audience's mind by describing colors, objects, scents, sounds, and taste. Specific details such as members, figures, and percentage can also be vivid. The key to brevity is to limit the number of ideas. Keep your message as brief and clear as possible. With few exceptions, one page is easier to absorb than two. In business environments, so many messages complete for attention, and you're better off covering 3 points thoroughly than 8 points superficially. Tie the message to your audience frame of reference. Show how new ideas are related to ideas that already exist in the mind of your audience. The meaning of the new concept is clarified by its relationship to the old. By highlighting and summarizing key points, you help your audience understand and remember the message. You can call attention to an idea visually using headlines, bold type, and indenting list, and by using charts, graphs, maps, diagrams, and illustrations. Before concluding your message or even a major section of a long message, take a moment or two to review the points you have just covered. Restate the purpose and show how the main ideas relate to it. This simple step will help your audience remember your message and will help simplify the overall meaning of complex material. Minimize noise. The careful choice of channel and medium helps focus your audience attention on your message. Even the most carefully constructed message will fail to achieve results if it doesn't reach your audience. Try to eliminate potential sources of interference. Use an attractive, convenient formal and pay attention to such details as the choice of proper words and quality of type. In addition
addition to minimize noise, giving your audience a chance to provide feedback is crucial, regardless of whether the response to your message is written or oral. Encourage people to be open and to tell you what they really think and feel. Of course, you have to listen to their comment, and you must do so objectively. Your goal is to find out whether the people in your audience have understood and accepted your message. Understanding these aspects will help you improve your communication. So let's move on. Feedback. Make feedback more useful by planning how and when to accept it, being receptive to your audience responses, encouraging frankness, using it to improve communication. ठीक है, तो हमारा ये टॉपिक हो गया कंप्लीट. टॉपिक नंबर 7 हमने इस वीडियो में कर लिया है टॉपिक नंबर 8.